Hello everyone and very good afternoon to you guys. We're of course going to continue with our discussion on the law of contracts. We're already discussing about some of the essentials of contract. We had started off with capacity to enter into contract, and then we moved on to some of the other areas, in particular focusing on the essentials of contract. Like for example, we have the concept of offer, the concept of acceptance, and when does an offer become complete, when does an acceptance become complete, and such other things. Just give me 1 second, the door is still open. Okay, that's that's that. Um, so anyway, like I was telling you guys, of course, we are going to keep discussing more and more of contract law. Today's session is primarily focused on again a very important and a very famous area of contract law from which you get a lot of questions. Historically, we've had a lot of questions from this particular area, that is the concept of free consent, right? बिकॉज कोई अगर ज़बरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है, राइट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वैलिड नहीं होता है, राइट. सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर इज नो फ्रॉड that is happening in any particular situation. We have to make sure that there is no misrepresentation, that there is no kind of undue influence, coercion. So कुछ और भी टाइप की चीज़ें हैं जिससे फ्री कंसेंट, राइट, फ्री कंसेंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है. एंड दैट्स बेसिकली द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू बी looking at, right? Very good afternoon, Soham. Very good to see you. As always, very good to see you. Just going to go through the formalities of introducing myself and the important courses that we have. So my name is Debajyoti Das and I'm an alumni of Hidayatullah National University, and I've also secured an All India Rank 20 in the NLS Bangalore entrance of 2006. I have been a Microsoft Intellectual Property Research Scholar, and after graduation I've been working with one of the top law firms of India, particularly Amarchand Mangaldas. Specifically, I was working in their capital markets team while I was there. You guys can of course join me on Telegram, and you can see that this is the group that you have to search for, and you'll easily be able to find it, and we can keep having some discussions there. You can of course remember to please use the code DAVE10 to get your additional 10% discounts on the variety of subscriptions that we do have, from ranging from 1 month right up to 24 months. And of course we have the smaller versions like 12 months, 18 months, 9 months, 6 months as well. 6 months probably most suited for the 2022 aspirants, and 12 months is probably most suited for the 2023 aspirants, because the examination is scheduled to happen on the 18th of December next year. Most of you are already aware of the unique features, special features that we have on the Unacademy app, on the Unacademy platform, both for the special classes as well as for the plus platform, right? We have the raise a hand and talk to the educator feature, the unlimited quizzes, access to the recorded sessions, and so on. Some of the interesting batches that have just come up, I wanted to let you know. Starting today evening, we have some batches, but a couple of days ago also we've had some batch launches, particularly the Let's Crack LSAT, which is a 30-day crash course for LSAT. That batch has already started off 2-3 days ago. You can definitely join in there. We also have the Gable Makers batch, right, for the 1-year comprehensive batch for 2023 aspirants. We do have the Ignite batch, which is starting in a couple of days, right? So 2 दिन पहले जो कुछ शुरू हुआ है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता रहा हूँ, और जो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, right, I'm definitely keeping you guys informed about that also. The 6-month batch for CLAT 2022 aspirants is the Ignite batch that is just getting launched. We also have the NLU Stalwarts batch, where I will also be taking up some of the legal topics, right? I will also be taking up some of the legal topics. So if you have been enjoying my lectures, इसमें comprehensive course होगा, थोड़ा detail में बातें होंगी, right, about a variety of these areas. So please do join in. This we are starting off on the 3rd of December,
and this batch is going to be both in English as well as Hindi. The Unacademy Law Aptitude Test continues to happen every alternate Saturdays. सुबह 11 बजे 60 क्वेश्चन 60 मिनट का होता रहता है, and of course the championship test has just happened. Those of you who were not able to give it live right then, you will have access to the variety of mocks etc. that we still have. The live quiz feature is also active, where you can host your own quizzes and you can participate in the quizzes that are being hosted by our lovely educators that are assisting you with your preparation process. Now, coming to our discussion on contract law in particular, we do have some essentials of contract that I want all of you to remember, right? Definitely याद रखना चाहिए कि क्या क्या essentials हैं हमारे contract के. Particularly, we've already had a discussion on offer and acceptance, and इन दोनों का हमने ये भी देखा कि stages of completion, right? Stages of completion of offer and acceptance, ये भी हमने उसमें definitely discuss किया था. And as I was telling you in the beginning, अब जो हमारा discussion होगा, that is specifically about free consent, right? That is particularly about free consent. उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे फ्री कंसेंट किसी का अफेक्ट हो सकता है, जिसमें से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो दो हम लोग देखेंगे. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो आता है, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड. ऑफ कोर्स फ्री कंसेंट कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय सम ऑफ द अदर थिंग्स, लाइक कभी कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, कभी कोवर्शन हो सकता है, राइट, वेयर देयर इज अ थ्रेट एंड यू आर थ्रेटनिंग अनदर पर्सन. अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप ही ऐसा है कि जैसे मेरे फादर ने मुझे कुछ बोल दिया या मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ बोल दिया, then I'm in a position where I will probably agree with them simply because of the nature of relationship that I actually have that I actually have with them. So those things also we will keep discussing, right? Those are things जो हम definitely discuss करेंगे. प्लस कोर्सेज में, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में तो वो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट इवन इन सम ऑफ द फ्री स्पेशल क्लासेस दैट वी कीप कंडक्टिंग, उसमें भी कोशिश करके हम ये सारी चीज़ों पे जितना हो सके एटलीस्ट हम ध्यान देंगे. इन द मीनवाइल मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, इन दोनों चीज़ों से मैं शुरुआत मेनली करना चाहता हूं, राइट? दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू गेट स्टार्टेड विथ, misrepresentation and fraud. So misrepresentation is any positive assertion, any positive statement in a manner not warranted by the information of the person making it, of that which is not true though he believes it to be true. अब पूरा आपको एकदम डिक्रिप्टोग्राफ करने की जरूरत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि मुझे वो स्टेटमेंट ट्रू लगता है. The person who is making the statement, okay, he believes कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सच है, राइट? एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव. सो अगेन, इंटेंट टू डिसीव नहीं होना चाहिए, विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव. ओके, विथ एन इंटेंट टू डिसीव जो होता है, दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनली lying to another person, intentionally misrepresenting certain information, intentionally giving out wrong information, right? वो सारी चीजें क्या होती है, that basically becomes fraud. Okay, so वो fraud की सिचुएशन में होता है कि हमने जानबूझ के झूठ बोला. जानबूझ के झूठ बोला है तो फ्रॉड हो जाएगा, बट अनजाने में, innocently, again if you look at these words, you should automatically understand. innocently, बिना जाने, मुझे सच ही लगता था मैंने इसीलिए बोला, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव बोला, इनोसेंटली बोला, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा स्टेटमेंट जो है एक गलत स्टेटमेंट है, राइट? whenever I give wrongful information and if the other person जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, if that person
basically believes that this statement is true, और मैं भी मानता हूं कि ये statement true है. Even I believe that the statement is true and the other person also believes the statement to be true, but unfortunately the statement is actually not true. Okay, unfortunately actually the statement is not true. तो वो सारे सिचुएशन में बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेशन होता है. अब मुझे पता ही है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तब वो फ्रॉड हो जाएगा. नाउ देयर आर ऑफ कोर्स सम इंपॉर्टेंट complications that you guys should really try to remember. Let's look at some of these things. Basically क्या क्या essential condition है. If we try to break it down, थोड़ा simple तरीके से हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, for misrepresentation to happen, misrepresentation होने के लिए there must be a wrongful statement. पहले तो गलत statement होना चाहिए. The statement must be about something. किस चीज के लिए होना चाहिए? Something that can affect the consent. Something that can affect the consent of the buyer. And most importantly, due diligence obligations. तो ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है, हम आते हैं. पहले तो wrongful statement होना चाहिए. Wrongful statement must be about something which matters, right? So for example, if I am trying to sell a horse, अब वो हॉर्स के बॉडी पे एग्जैक्टली कितना हेयर है, राइट, कितने बाल हैं, दिस इज नॉट समथिंग. मैंने कहा 1,21,800 है. अब इट टर्न्स आउट कि भाई 1,21,000 नहीं था, 1,15,000 था. 5,000 बाल कम थे या 1,000 बाल कम थे या जो भी था. इज द स्टेटमेंट रॉन्ग? यस, स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया क्योंकि मैंने जो बताया वो स्टेटमेंट गलत था. मैंने जो हेयर का काउंट प्रोवाइड किया, दैट काउंट इज नॉट करेक्ट. गलत स्टेटमेंट तो हो ही चुका है. बट दिस wrongful statement, does it affect the consent of the other party? Is it something that is so important? Is it something that is so important that the other party is going to directly deny buying the horse? क्या इतना फर्क पड़ेगा? Then the answer is probably no, right? हाँ, अगर मैं हॉर्स के साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, let's say if the horse is a mad horse, right, the horse is not of sound mind, the horse is of unsound mind. Very popular questions जो past year papers में भी so many times we've had this kind of question. If the horse is somebody of unsound mind, okay, the horse is somebody of unsound mind, this is something, मैंने कहा कि नहीं हॉर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now this is something which can actually affect the consent of the other party, right? So important cheese, basically whatever is the wrongful statement, it must be about an important thing. But in any buyer seller contract, there is a certain degree of due diligence that the buyer must have. buyer का एक ड्यू डिलिजेंस का, बेसिक ड्यू डिलिजेंस का ऑब्लिगेशन होता है, राइट? दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रिंसिपल दैट आई एम श्योर लॉट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट, द प्रिंसिपल ऑफ caveat emptor. Okay, caveat emptor, which basically means buyer beware. caveat emptor का क्या मतलब है? बायर बिवेयर. बायर को अवेयर होना चाहिए, बायर को केयरफुल होना चाहिए. अब ये अवेयर और केयरफुल और ये सारी चीजें, बायर, हाउ विल द बायर अचीव दिस केयरफुलनेस और वॉट एवर दिस इज? द बायर विल अचीव इट सिंपली बाय बीइंग केयरफुल, सिंपली बाय बीइंग डिलिजेंट, राइट? यहाँ डिलिजेंस की बहुत जरूरत है. व्हाट इज दिस डिलिजेंस? बेसिकली
there is something, if there is an information which has been given to you, right? If there is an information that has been given to you, but that is an information, which you can easily find out, that you can easily verify by ordinary care, by ordinary diligence, तो फिर आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया। दिख रहा है कोई चीज इजीली वेरीफाई हो सकती है, इजीली चेक हो सकता है, तो फिर गलती सेलर की नहीं दिखाई जाएगी, राइट? दैट टाइम द ब्लेम कैनॉट बी ऑन द सेलर कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। दैट लॉजिक डजंट रियली वर्क इन दैट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, let's say if I have gone to purchase a car, एक सेकेंड हैंड कार मैं परचेज करने गया हूं। Now in that second hand car scenario, the car does not have any wheels, या कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं था, या कार में सीट नहीं था, या कार के टायर नहीं थे। Something which if you simply look at the car, you will be able to derive, you will be able to verify कि obviously there is a problem. अब वो कार में व्हील्स ही नहीं है, मैं गया कार को देखा, फिर मैंने सेल्समैन से पूछा, शॉप के ओनर से पूछा कि भाई इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द कार? सेल्समैन ने कहा नो सर, नो प्रॉब्लम। कैन आई ब्लेम द सेलर इन दिस सिचुएशन? देन द आंसर इज नो, absolutely no chance, because this is an obvious kind of problem, right? This is an absolutely obvious kind of problem. इस obvious problem में आप seller की गलती नहीं बता सकते। But let's say एक और example देखते हैं। Please go through this example carefully. A wants to buy a car, B is the seller, okay? Now this is a car which has a unique problem, that is the engine, कार का जो इंजन है, it gets overheated. ओवरहीटिंग का मेजर प्रॉब्लम हो जाता है कार में, कार को आप फिर चला नहीं पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, there are multiple layers of problems that you will face, but it happens only after there is a successive driving of more than 100 kilometers. 100 किलोमीटर आपने लगातार चला लिया तो कार में ये ओवरहीटिंग और ये वाला प्रॉब्लम शुरू होता है। That's when this problem begins. The question is this also something that can be ordinarily verifiable? तो दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज नॉट ऑर्डिनरीली वेरीफाइबल। ये ऑर्डिनरी तरीके से तो नहीं वेरीफाई किया जा सकता, राइट? इसमें हमें यही करना ही पड़ेगा कि भाई 100 किलोमीटर का अगर टेस्ट ड्राइव किया है किसी ने, 100 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव करेंगे, ओनली देन विल यू बी एबल टू फाइंड आउट दैट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स इन दिस कार, राइट? हाँ, कार में टायर ही नहीं है, दैट इज ऑर्डिनरीली वेरीफाइबल। 100 किलोमीटर के बाद ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम होता है, दैट इज समथिंग, क्योंकि टेस्ट ड्राइव भी कोई करने जाएगा तो 100 किलोमीटर थोड़ी चलाता है कोई, 10-12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला लिया तो 30 किलोमीटर दूर तक भी गए तो भी 30-30-60, राइट? एक तो 30 किलोमीटर दूर तक कोई जाता नहीं है नॉर्मली, आई एम जस्ट सेइंग। सो ऑर्डिनरी, द टेस्ट इज ऑर्डिनरीली नॉर्मल तरीके से क्या इसको वेरीफाई कर सकते थे? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो, राइट? So, because this is not ordinarily verifiable, the duty of the seller is going to continue. Therefore, the seller is liable. Therefore, it is the responsibility of the seller to verify, to check, whatever, to inform, right? Therefore, it is the duty of the seller to inform the buyer कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम था, या हाँ इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी है, right?
पिछले वाला एग्जांपल फिर से अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ सिचुएशन में क्या होता है दैट यू आर नॉट एक्चुअली रिलाइंग ऑन द सेलर। ये तो अगर मैं सेलर पे डिपेंड कर रहा हूं तो sometimes it is also possible that I'm not even relying on the seller. For example, again, this is a direct question from past year papers, right? So should be pretty easy for you guys. A went to a shop owned by B to buy bread. Okay, bread खरीदना था। ब्रेड ऑमलेट खाएंगे या सैंडविच बनाना चाह रहे, जो भी ब्रेड खरीदेंगे। A asked B for the best bread. A is the consumer, A is the buyer. A asked B for the best bread. B responded by saying, people usually buy modern company ka bread from me. People will buy modern company bread from me. अब ये सुना ए ने प्रोसेस किया, फिर ए ने क्या किया, ए बॉट मॉडर्न ब्रेड and the bread ultimately turned out to be bad. Bread में कुछ ना कुछ problem था, and now A wants to file a case against B. Has the buyer in this case relied on the seller? भाई there must be a wrongful statement. ये by the seller है, right? यहाँ पे obviously by the seller. Now is there a wrongful statement by the seller in this case? यहां पर नो ही है आंसर। ओके, एम्फेसिस के साथ नो बोलना चाह रहा था मैं यहां पर, इसलिए मैंने मल्टीपल ओज मेंशन कर दिया। बट डेफिनेटली यहां पर बायर ने सेलर पे रिलाई नहीं किया। क्यों नहीं, कैसे सेलर पे रिलाई नहीं हुआ है? बिकॉज द सेलर इज नॉट ऑफरिंग हिज ओन स्किल एंड जजमेंट। सेलर का अपना जजमेंट नहीं है ये, सेलर ने तो बस ये बताया कि लोग क्या खरीदते हैं। सेलर ने सिर्फ इतना ही बताया है कि लोग क्या खरीदते हैं। तो अब लोग जो भी खरीदते हैं, आपने बेसिकली क्या किया है, यू हैव डिसाइडेड टू परचेज दिस पर्टिकुलर ब्रेड नॉट बिकॉज ऑफ द सेलर्स ओपिनियन बट बिकॉज ऑफ द ओपिनियन ऑफ द पीपल। आप लोगों के ओपिनियन के बेसिस पे यू आर बेसिकली मेकिंग दैट डिसीजन। सो पीपल, बट पीपल तो सेलर है नहीं, तो पीपल के अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने लोगों के साथ नहीं किया है। डेमोक्रेसी जिम्मेदार नहीं हो सकती, राइट? वो जो भी खराब था उसमें भी तो भी लोगों को पसंद आ रहा है तो आ रहा है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट स्टेप, इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू लुक एट इट, स्टेप वन जो है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दैट यू मस्ट, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू मस्ट have relied on the seller. पहले तो आप सेलर की बातों को मान रहे हैं या नहीं, सेलर पे आप डिपेंडेंट हैं या नहीं है, दैट इज स्टेप वन। if something can be easily verified, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, याद है ना, कार में टायर ही नहीं है भाई, कार में टायर ही नहीं है तो सेलर की गलती नहीं बता सकते। यू कैनॉट ब्लेम द सेलर इफ द कार डज नॉट हैव टायर्स, बिकॉज वो आपको भी देखना चाहिए था, वहीं दिख ही रहा था कि कार में टायर नहीं है। सो यू कांट रियली ब्लेम द सेलर इन दैट सिचुएशन। सो हैव यू रिलाइड ऑन द सेलर? यस, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। बट क्या आप रिलाई कर सकते थे उस चीज पे? क्या आपको ऑर्डिनरीली वेरीफाई करने की जिम्मेदारी थी वहां पर? अगर वो ऑर्डिनरीली वेरीफाइबल था तो सेलर की गलती वैसे भी नहीं निकलेगी, बट ऑर्डिनरीली वेरीफाइबल नहीं था एंड यू हैव रिलाइड ऑन द सेलर, देन द सेलर इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। तब सेलर की डेफिनेटली जिम्मेदारी वहां पर आ जाएगी कि हाँ भाई, मैंने ऑर्डिनरीली कोशिश भी की थी लेकिन ऑर्डिनरीली तो ये चीज वेरीफाई हो नहीं पाती, इसलिए मैंने आपकी बात मानी, इसीलिए मैंने आपकी बात सुनी। एंड इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, इफ यू आर नॉट giving me correct information or you are giving me wrongful information, of course in that situation you are ultimately going to be held responsible, you are going to be held liable, and therefore I should be in a position to be able to avoid the contract, because ये सारे क्या हैं, इसमें से कोई भी void contract नहीं है। just let me go back, ये सब voidable contracts हैं, right? voidable, which means can be avoided,
can be avoided at the option, right, of the person, can be avoided at the option of the person who has been misrepresented or defrauded or influenced or coerced, or somebody who has been mistaken. So this is an option to avoid, right? avoid करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है, और आप अवॉइड करने का ऑप्शन आप एक्सरसाइज कब कर सकते हैं? व्हेन कैन यू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन? ओनली इफ वन ऑफ दीज थिंग्स हैज हैपेंड, राइट? कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है आपके साथ, या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, एंडी इन्फ्लुएंस हुआ है, कोवर्जन हुआ है, कुछ ना कुछ अगर हुआ है, देन एंड ओनली देन कैन यू एक्चुअली अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो और ये सारी चीजें, सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे, ओनली देन is any of this actually going to happen, right? Now fraud basically means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent. यहां पर with intent आ गया, याद है ना? पिछले वाले में हम देख रहे थे विदाउट इंटेंट था। मिसरिप्रेजेंटेशन जितनी बार भी देखेंगे विदाउट इंटेंट, ओके? मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या था? विदाउट एन इंटेंट था, इनोसेंटली था, राइट? he believed the statement to be true, at least he himself believed that this statement is true. but fraud में क्या हो रहा है? जानबूझ के, with the intent to deceive, जानबूझ के मैं अगर झूठ बोलूं, किसी चीज को एक्टिवली कंसील कर रहा हूं, मैं छुपा रहा हूं, ये फोन में बेचना चाहता हूं, राइट? अब इस फोन में अगर ये कोई चीज टूट गई है, कुछ हो गया है, मैं इस पे कवर डाल दूं, छुपाने लगूं, राइट? लाइक इसमें शायद कुछ सही में टूटा भी है क्या, मुझे याद भी नहीं आ रहा। हाँ देखो, सही में टूटा भी हुआ है पीछे, हाँ, तो मैंने लेकिन कवर डाल दिया है सिर्फ छुपाने के लिए, अगर सिर्फ लोगों से छुपाने के लिए अगर कवर डाला हुआ है और उस हिसाब से मैं बेचना चाह रहा हूं, देन दैट वुड बेसिकली बी अमाउंटिंग टू फ्रॉड, राइट? सजेशन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। भाई पता है कि ये नॉट ट्रू है, एंड हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू? मुझे पता भी है कि ये झूठ है, एक तो स्टेटमेंट फॉल्स है ही, राइट? बट फ्रॉड में मेन डिफरेंस क्या पर हो रहा है, दैट मुझे पता भी है कि ये चीज सच नहीं है, फिर भी मैं अगर आपको कोई चीज बताऊं, फिर भी मैं अगर आपको रॉन्गफुल स्टेटमेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट? सिमिलरली अगेन, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, परफॉर्म करना ही है बट विदाउट एनी इंटेंशन, मैं जानबूझ के, मुझे पता है, डिसीव करने के लिए कोई चीज लगाया हुआ है, any act or omission as the law specifically declares to be fraudulent, जानबूझ के किसी चीज को अगर फ्रॉड बताया ही गया है, ऑब्वियसली वो चीज फ्रॉड के डेफिनेशन में आएगी, दैट विल स्पेसिफिकली अमाउंट टू फ्रॉड, राइट? नाउ इट इज द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फ्रॉड is that mere silence, आपने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ चुप है, okay? Mere silence as to facts which are likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. Normally, मैंने अगर कोई झूठ बोला नहीं, मैं सिर्फ चुप हूं, नॉर्मली ये फ्रॉड नहीं होगा। बट इफ द सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, स्थिति ऐसी है, सिचुएशन ऐसा है कि आपकी खामोशी भी एक झूठ है, silence itself is becoming fraudulent, silence itself is becoming a deception, a means of lying, right? उस सिचुएशन में, right, उस सिचुएशन में definitely you will again be held responsible for fraud. For example, if A sells a horse to B which A knows to be unsound but A says nothing, okay? अब ए अगर खुद ही कुछ बोलेगा तो फ्रॉड है ही, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन अबाउट इट, देयर इज शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। जानबूझ के अगर मैंने बोला है तो फ्रॉड है ही है, नो कंफ्यूजन। बट मैंने कुछ नहीं बोला, अगर इफ आई डिड नॉट से एनीथिंग,
then this is not fraud in A. Okay, normally this is not fraud. But same situation mein, B is A's daughter, same facts. B is A's daughter and has just come of age. Here the relationship between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. Okay, यहाँ पर because B is the daughter, B is A's daughter, right? B is the daughter. तो यहाँ पर कम से कम A की जिम्मेदारी बन रही है. यहाँ पर A की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एटलीस्ट because the daughter is otherwise going to assume, right? The daughter is definitely going to assume कि अब मेरे पिताजी ही मुझे झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे. मेरे पिताजी अगर मुझे कोई हॉर्स बेच रहे हैं, obviously my dad is going to tell me that this horse is of unsound mind, or there is this problem with this horse or that problem with this horse. So if my father also is not going to tell me the truth, ये मेरा expectation ऐसा नहीं होगा, right? Whether I'm the daughter or I'm the son, in any case, I don't expect my dad to lie to me and sell me something which is completely deceptive or anything like that. तो अगर father daughter type का relationship है, तो फिर silence about a problem itself is fraud, right? तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा silence itself amounts to fraud. But अगर कोई relationship नहीं है, उस type का relationship नहीं है, right, where the other party is simply relying on your good faith, on your goodness of heart because of the nature of relationship or anything like that, इस type का अगर कुछ भी नहीं है, इस टाइप का कुछ भी अगर नहीं है, तो भाई ऐसा है कि कोई फ्रॉड नहीं. तुम या तो चेक करो या मुझसे पूछो. जब तक मैं झूठ नहीं बोला हूं तब तक फ्रॉड नहीं हो सकता है, राइट? सो दैट्स मिसरिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड. अगेन ये सारी चीजों को इंक्लूडिंग अदर थिंग्स अबाउट फ्री कंसेंट we will keep discussing, particularly we will keep discussing in special classes as well, right? And we will keep discussing in the plus classes में तो बिल्कुल extreme detail के साथ किया जाएगा. So we will continue with our discussions on the law of contracts, on fraud, misrepresentation, undue influence, coercion, as well as the concept of mistake, जैसे जैसे हमारी मुलाकात होती रहेगी. In the meanwhile, guys, please do remember to join me on the Telegram group. वैसे तो कल दोपहर को भी, right? कल दोपहर को भी have contingent and wagering contracts और ये सब पे कल भी एक सेशन है YouTube पे. YouTube पे 3 PM we have wagering contracts, wagering, bailment, right? Bailment and contingency, right? Contingent contracts. ये सारी चीजों पे tomorrow 3 PM we are going to be meeting once again. And of course we are going to continue with some of these things on special classes like undue influence, coercion वगैरह मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हूँ, बट वो सारी चीजें हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, राइट? ये हम स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस में डिस्कस करेंगे. Some things I will be able to discuss on YouTube, of course, and some things I will be able to discuss on the app. Guys, please remember to use the code DAVE10 and please do remember to subscribe and hit the bell icon so that you're not missing out on any of the notifications for the sessions that are going to keep coming up. In the meanwhile, have a lovely day ahead of you, and I will see you guys tomorrow once again. Thank you very much. Have a great day ahead of you guys. Bye bye.